अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा आइडियोलॉजी लिबरलिज्म के बारे में एक अप्रोच। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will see another approach of political science, that is feminist approach. Before this we already read about empirical approach and normative approach. So in this video we will look through the feminist approach. चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से कि क्या है फेमिनिस्ट, किस तरह से ये अप्रोच के रूप में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बॉर्न आउट of the struggle of the feminist movement of the 20th century. Feminist political theory is characterized by its commitment to expanding the boundaries of the political. The feminist approach to the study of political science is a new age development in the evolution of political science. The approach emerged with growing awareness of the rights of women. Basically, इसकी स्टार्टिंग होती है जब वुमेन्स के लिए राइट की बात आती है, तो वहाँ पे फेमिनिज्म की शुरुआत होती है. एज अ फेमिनिज्म एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट वर्क्स टू फाइट इनइक्वालिटी एंड द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन. बेसिकली फेमिनिज्म एक मूवमेंट की तरह सामने आया, एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह सामने आया जो कि काम करता है जो वुमेंस के लिए इनइक्वालिटी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए, वुमेंस जो सबऑर्डिनेशन हो रहा है वुमेन का इन ऑल द एक्सपेक्ट, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह सामने आता है. सो द गोल ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स इज़ टू एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन थ्रू criticizing and transforming institution and theories that support women's subordination. बेसिकली अगर हम बात करें कि इस फेमिनिस्ट का मेनली गोल क्या है, तो इसका गोल है टू एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन के जो डोमिनेशन उसको ख़त्म करना. ये किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? ये मेनली इसको ख़त्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट लेना चाहिए और उन चीज़ों का सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि वुमेंस का ये जो सबऑर्डिनेशन है वो ख़त्म किया जा सके और वुमेंस को इक्वलिटी मिल सके. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी ओरिजिन ऑफ द अप्रोच, कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे ये फेमिनिस्ट अप्रोच सामने आता है. सो द टर्म फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी or feminism emerged in the late 20th century during the women's liberation movement of the West, largely in the USA and UK. It was envisaged that Western political theory for most of its history and had ignored women. Feminist political theory, in contrast, saw women and their experiences as important to political analysis of a given time and a society. It is also a constant engagement with feminist political thought on how to achieve an equal status of women. बेसिकली इसकी ओरिजिन की बात तब आती है जब वुमेंस के लिए इक्वलिटी को देखा जाता है, वुमेन की इक्वलिटी स्टेटस की बात की जाती है, तभी से इसका ओरिजिन हुआ है. बेसिकली इट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच एज हाउ एवर द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थॉट हैज़ बीन एन अनइवन एक्सरसाइज with additions and disagreements emerging in the form of different waves of feminist ideology. So this is the origin part of this approach. अब हम बात करेंगे फेमिनिज्म की किस वेव में आया है. बेसिकली इट कम्स इन 3 waves, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव. सो वी विल लुक. सो वी फर्स्ट टेक फर्स्ट वेव. क्या था फर्स्ट? related to feminism and kingdom from की स्टार्टिंग जो मानी जाती है वो स्टेटेड होता है 1920 Seneca was declared in 18 फॉल्स डिक्लेरेशन के साथ होती है जिसका डिक्लेरेशन एलिजाबेथ कैरी स्टैंटन 1884 में न्यूयॉर्क में करती हैं. सो द डिक्लेरेशन गिव द न्यू political strategies and ideologies for the feminist movement. It focused on women's economic, sexual and reproductive rights. बेसिकली जो ये
सेनेका फॉल डिक्लेरेशन होता है, इसका मेन फोकस होता है वुमेन्स की इकोनॉमिक, सोशल और प्रोडक्टिव राइट्स के लिए. हाउएवर, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the feminist activists shifted their attention toward political rights of women, especially the women's right to vote. इसको पास होने के बाद, सेनेका फॉल डिक्लेरेशन को पास होने के बाद मेनली इसका फोकस जो था फेमिनिस्ट एक्टिविटीज़ का वो बढ़ा वुमेंस के पॉलिटिकल राइट्स को, और इसमें पॉलिटिकल राइट्स में स्पेशली था राइट टू वोट, वुमेंस के लिए राइट टू वोट को लाना. ये था फर्स्ट वेव. सो लेट्स सी अब व्हाट हैपेंस इन द सेकंड वेव. सेकंड वेव बिगेन इन द 1960s. आफ्टर द फर्स्ट वेव a wave came that is called second wave. It's beginning in the 1960s time period, as it was concerned with the legal and social equality of women, that is ending the legal sex discrimination. इसकी जो कंसर्न है मेनली वो लीगल और सोशल इक्वलिटी पे है वुमेन के, दैट इज एंडिंग द लीगल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन. राइट फॉर वुमेन टू हैव एक्सेस द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द वर्क प्लेस. Betty Friedan's The Feminist Mystic, published in 1963, had a great impression on the second wave of feminism. It was during the second wave that the slogan "The personal is political" was coined by Carol Hanisch. It was a period when personal lives of women were seen as a reflection of deeply political power structures of patriarchal society. Thus, unlike the conventional feminists, radical feminists of this period kept politics of the personal at the center of their movement. So basically क्या था कि सेकेंड वेव ये कहता कि पर्सनल इज पॉलिटिकल. बेसिकली जो जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको उसमें वो भी एक तरीके से पॉलिटिकल ही हैं, बिकॉज all the men's domination on women is also a personal effect. It affects personal order, personal political arena. सो दिस टाइप से ये सेकेंड वेव था जिनमें रेडिकल फेमिनिस्ट आए सामने. एंड लेट्स सी द थर्ड वेव. व्हाट इज थर्ड वेव? द थर्ड वेव redefined femininity, which was strong in control of their sexuality and assertive. Besides this, the internet revolution of the late 20th century contributed in the articulation of the micro-politics of the third wave. The internet also provided for women-only spaces in the form of e-magazines, which became an important platform. The dissemination of feminist ideas. Internet helped women overcome the geographical boundaries in expressing solidarity with women in the developing world. Thus, the political approach of the third wave was more inclusive, multicultural, and global compared to its predecessors. Basically, third wave क्या था? Third wave is the wave of to make strong control of their sexuality and assertiveness. ये वेव था ग्लोबल वेव, इंटरनेट का वेव. टाइम आ गया था जब जिसके थ्रू जो वुमेन्स थी वो अपने आप को डेवलप कर सकती थी, वो अपनी उस जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर आ सकती थी, वो अपने आप को और बेहतर कर सकती थी, उनके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई. सो बेसिकली द थर्ड वेव इज़ द वेव विच कम्स आफ्टर लेट 20th century, एंड इफ़ वी से देन वी कैन से द पीरियड इन विच वी आर लिविंग इज़ द थर्ड वेव ऑफ द फेमिनिज्म. So, the political approach of the third wave are more inclusive, multicultural and global compared to its. जो थर्ड वेव है वो फर्स्ट और सेकंड वेव के कंपेरिजन में ज़्यादा इंक्लूसिव और मल्टीकल्चरल माना जाता है, बिकॉज इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन इन कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड वेव. सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन दिस waves of feminism, and there now the another part of this features of the approach. So what are the main features of the feminist approach? It roots of all problem in gender equality. Then second is citizens male bias, stand of women's liberation and empowerment of women, tackles problems of women clubbed with other approaches. सो ये जो मेनली फोकस इसका फीचर्स है कि रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज जेंडर. सो सभी समस्याओं की जड़ वो जेंडर लिंग भेदभाव है. दूसरा सिटीजन्स मेल बियास, मतलब कि पुरुषत्व की प्रधानता, पुरुष की प्रधानता. स्टैंड फॉर वुमेन्स लिबरेशन एंड एम्पावरमेंट, वो इस मेनली जो फेमिनिज्म है ये फोकस करता है वुमेन्स के एम्पावरमेंट को, इनका सशक्तिकरण के लिए.
और टैकल्स प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, औरतों की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए क्लब्ड विद अदर अप्रोच, और ये अनदर अप्रोच से भी जोड़ता है। सो हमने इस वीडियो में देखा इतना ही। अपने इस नेक्स्ट वीडियो में हम और एक्सप्लेन करेंगे इससे फीचर्स ऑफ द अप्रोच एंड टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। सो थैंक यू, we will meet in next video. Please like, subscribe and comment on my channel. Thank you so much.